हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ఎలా ఉన్నారు? आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करते हैं आप लोग नया साल में सब लोग अच्छा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा करने के लिए। आई होप दैट डेफिनेटली यू विल एंजॉय टुडेस वीडियो। आज का टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट, एक नया टॉपिक है, एक जबरदस्त टॉपिक है। I hope that you will enjoy this topic. I like this topic very much. मैं उम्मीद करता है आप लोग भी वो टॉपिक को कंपल्सरी पसंद करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? पहले हमको जानना चाहिए वो डायरेक्ट करंट क्या है। व्हाट इज डायरेक्ट करंट? सपोज you see that first you have to know direct current. डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट करंट? सपोज एक रेसिस्टर कनेक्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए बैटरी or the cell. This is the battery or cell. Suppose now this is in a circuit. Whenever it is connected across the ends of a battery, a current is established. जब एक सर्किट में वो बैटरी कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होते हैं। That current we say steady current. That is direct current. डायरेक्ट करंट का मतलब वही है, हर वक्त पर वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड, ऑलवेज इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। द करंट इज स्टेडी करंट, इट इज स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। इट्स magnitude constant, always flows from positive to negative। आप बोल सकते हैं क्या वो यूनिक डायरेक्शन और यूनिक डायरेक्शन, यूनिक direction, current which flows only from higher potential to lower potential, means only in one direction, it is steady current। उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू फिक्स्ड है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स है। we say it is direct current by DC current। you know that battery or cell उसका सोर्स है, बैटरी सेल is a source of an electric current। Suppose we need 5 ampere current, this cell is providing 5 ampere current, वो continuous 5 ampere ही प्रोवाइड करेगा और कुछ नहीं, उसका चेंज नहीं होगा। no change in direction, no change in value or magnitude। so the current which flows only from positive to negative, only in one direction, that is the direct current। and written is a steady current, magnitude constant, all the time it flows from positive to negative, its direction fixed, direction also constant, all the time from positive terminal to negative terminal। ओके बच्चे, देखो हम लोग 10th में पढ़ा करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge। that means I can say I is equal to Q by T। what is this? we say this I stands for average current, I stands for average current। so or I can write I average is equal to Q by T। if anything depends upon the time, हम उसका
एवरेज निकालने के लिए उसको टाइम में डिवाइड करना चाहिए। We know that I is equal to Q by T, but current is the rate of flow of charge. Suppose I have written here I average Q by T. This Q stands for charge, T stands for time. So this current we say average current, total charge डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसको बोलते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। सपोज हम लोग को इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर मोमेंट में वैल्यू ऑफ करंट कितना है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द करंट एट एग्जैक्ट टाइम, पर्टिकुलर टाइम। So, if I say that I instantaneous, then how I shall write? We write dq by dt, derivative of charge with respect to time. This is about the instantaneous current. Suppose हम लोग को average current चाहिए, I can write like this way. So this is I instantaneous. Okay, I shall not write like this. This is I instantaneous. Some books I average also has written like this. This is the mean value or average value. कुछ बुक्स में I का ऊपर बार लगा है. Okay. Otherwise I average or we can say I doesn't matter. So I equal to dq by dt. This is the instantaneous current. I can say this is instantaneous current at a particular time. So I can say that this is I dt is equal to dq. So if I want to calculate the I average, or I can say that average of this instantaneous current, then what I have to do? I have to do, see here, I is equal to total charge. Total charge, how we calculate? We take integration of a dq or integration of a I dt divided by integration of a total time. Total time means I shall take the integration of dt. You can use here 0 to t, no problem. You can use here 0 to t. Otherwise I can write it 1 upon t integration of I dt. वही है एवरेज टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला. You can write here 0 to t, does not matter. So this is the instantaneous current. How to calculate average of this current? We use this formula 1 upon t integration of I dt. I hope you are clear about this direct current. This is all about the direct current. Okay? So this formula we can use for direct current as well as alternate current, but some alternate current, some special cases are there. इसको मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊं. ओके बच्चे? See here. So हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट बोलने से पहले मैंने आपको डायरेक्ट करंट समझा दिया. वो एक स्टेडी करंट, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, उसका डायरेक्शन फिक्स है, हर वक्त पर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं. इट ऑल टाइम मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, इट्स डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट. ओके, लेट अस गो टू डायरेक्ट अल्टरनेट करंट. हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट.
If the current changes sinusoidally, or you can say the current changes periodically. Periodically means एक रेगुलर टाइम इंटरवल में जब करंट चेंज होते हैं हम उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? The current which changes its magnitude as well as direction periodically. The current which changes its direction as well as magnitude, that is also periodically. Periodically मतलब एक regular interval का बाद. Here the time period is equal to t. I can write this is equal to 2 pi by omega. This 2 pi stands for what? This is the angular displacement. This is the angular velocity. This is the time. So this current changes its direction after t second, you can say. After 2 pi by w, you can say. Here 2 pi is the angular displacement. This is the velocity. This one you can say angular velocity. This is the angular displacement. Okay, so this alternating current को हम लोग लिख सकते I is equal to I naught sin omega t. I equal to I naught sin omega t. Very very important वो टॉपिक के लिए। वो चीज क्या है मैं अभी अभी आपको समझा रहा हूँ। I'm trying to explain what is this I equal to I naught sin omega t. This is for alternating current purposes. Let us see at first alternating current को हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। Some students you might have studied in your high school, especially our Telangana children, in your school book also, generator is there, dynamo is there. लेकिन जो CBSE स्टूडेंट्स और जो ICSE स्टूडेंट्स उसका किताब में 10th क्लास में जेनरेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं। जो भी हो वो जो करंट प्रोड्यूस होते हैं उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। वो ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, लेट अस सी। So just I am going to explain induced EMF, or you can say that EMF induced as the coil rotates. इंडक्शन करंट डेवलप करने के लिए कॉइल को रोटेट होना चाहिए मैग्नेट फील्ड का अंदर। बच्चे एक बात कान खुलकर सुनो, डायरेक्ट करंट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज ए very very important point. See here, directed current produces magnetic field.
जब एक कंडक्टर का अंदर करंट फ्लो होते हैं, उसका सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं. डायरेक्ट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ऑल्टरनेटिंग करंट produced by a magnetic field. डायरेक्ट करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. सो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड. ये सब कैसे होते हैं? वो जनरेटर में हो सकते हैं. I hope you might have studied in the current electricity or direct current. You might have studied in current electricity about the generator. Here, just I shall explain a little. आपको याद करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट कैसे एक जनरेटर में पैदा होते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए. Try my best to explain how an alternating current is produced either by a generator or by a dynamo. That means generator और dynamo हम लोग alternating current पैदा करने के लिए यूज करते हैं. वो कैसा होते हैं? देखो, देखो बच्चे, आज मैं जब शूटिंग कर रहा हूं, एक्चुअली टुडे इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डे व्हेन आई वाज इन तेलंगाना, बिकॉज दिस इज द वी से देयर संक्रांति. हमारा उड़ीसा में यहाँ पर हम लोग उसको मकर संक्रांति बोलते हैं. मैं जब तेलंगाना में था, मेरा बहुत सारे स्टूडेंट थे, हम लोग धूमधाम सेलिब्रेट करते. मैं आप लोग को मिस कर रहा हूं बच्चे लोग. देखो, और ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होते हैं जनरेटर में. देखो, सपोज दिस इज द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए हॉर्सशू मैग्नेट. वो लाइन रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ऑल टाइम इट्स डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ तक. दिस आई क्रिएटेड वन मैग्नेटिक फील्ड बाय प्लेसिंग ए हॉर्सशू मैग्नेट. वो नॉर्थ पोल, वो साउथ पोल हॉर्सशू का मैग्नेट. वो लाइन रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड डायरेक्शन. हर वक्त पर हम लोग को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ तक, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, सपोज a coil of n turns. Suppose a coil of n turns placed in a magnetic field of strength B. That means n is the number of turns. See that I can draw this coil like this. Okay, this is a rectangular coil I placed in between north and south poles. Suppose from outside mechanically I am able to rotate. जब वो रोटेट होते, जो करंट पैदा होते, उसको हम लोग इंड्यूस ईएमएफ और द करंट इज इंड्यूस्ड करंट हम लोग बोलते हैं. वी से द करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दैट इज induced EMF or induced current. Suppose a coil of n turns produced
placed in a magnetic field of strength B. Now, suppose now the time is equal to 0. You think that now the coil is placed here. Suppose this is the coil. This is the coil. This is the coil. This is the area of the coil. Now this coil is placed like this. The coil is placed. This is the magnetic field lines. Now the area of the coil is perpendicular to this magnetic field. That means the flux is maximum. Already you know number of lines passing through a unit area perpendicular to the surface. उसको हम लोग magnetic flux बोलते हैं. Now flux is maximum. Now this one हम लोग रेफरेंस पॉइंट सोच सकते हैं. दिस इज द कॉइल, इट्स एरिया ऑफ द कॉइल. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. नाउ द फ्लक्स इज मैक्सिमम, बट दिस इज नॉट द चेंज इन फ्लक्स. वो फ्लक्स अभी मैक्सिमम है, लेकिन वो फ्लक्स करंट पैदा कर सकते नहीं. द रीजन इज दैट हम लोग को मालूम है कि करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को फ्लक्स को चेंज करना चाहिए. सो एट द बिगिनिंग यू थिंक दैट द कॉइल इज लाइक दिस एग्जैक्टली. दैट मीन्स द फ्लक्स इज जीरो. सॉरी फ्लक्स इज मैक्सिमम बट करंट इज जीरो. देन हाउ मच फ्लक्स इन ईच टर्न? सो वी नो दैट this flux is equal to, this is the magnetic flux as we can find, or we can use the phi b, it doesn't matter. देखो बच्चे, this flux is the product of B and A. B is the magnetic field strength. A is the area. A is the area of the coil. Area of the coil. Beginning, it is perpendicular. It is starting point. Suppose it starts to rotate. It starts to rotate when the time is equal to t second. Suppose its time is t second. It rotates some angle. That angle is equal to theta. Is I can write this is omega t. Theta equal to omega t. कैसे? हम लोग को मालूम है angular velocity is equal to angular displacement by time, or I can write this theta is equal to omega t. So time t second, उसका angular displacement is wt. Then what about the flux? For each turns of coil, flux. So I can write this flux is equal to n b a cos omega t. Listen carefully. If I use the single term, I shall write BA cos omega t. Flux per n turns. Flux per n turns is equal to n BA cos omega t. Here the coil is rotating sinusoidally. All time the current which is produced, it changes its direction. So I can say that according to the Faraday's law for electromagnetic induction, what is that? Induced EMF is negative rate of a change of a magnetic flux. So according to Faraday's law of
electromagnetic induction is the negative d phi by dt. I can write this is minus NBA minus d by dt NBA cos omega t. See here. Flux is NBA cos omega t. Here n is the number of terms, that is the constant. This is constant. B is constant. A is also constant. So I can write like this way: minus n b a derivative of d by dt of cos omega t. Okay, so bache. Okay, so now this is minus n b a. So cos omega t is equal to minus sin omega t into omega. That means I can write minus n b a omega. Minus minus cancel, so I can use n b a omega into sin omega t. Sin omega t, minus into minus plus हो गया. Okay, derivative of cos omega t, that is minus sin omega t. Again here it is omega. Okay, so UV method I used. So we got that NBA omega sin omega t. This is induced EMF, but this is called induced current or induced EMF. So the current which produced here, alternating current, उसका डायग्राम कैसे होते हैं? See here. यहाँ पर हर वक्त पर करंट का डायरेक्शन चेंज होते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होते हैं. यहाँ पर here magnitude is maximum. I can say that this is the peak current. This is the peak value of the current, or you can say amplitude of the current. This one is the I naught. You can say the E naught. You can say the V naught also, does not matter. See that here angle is how much? Pi by 2. Here angle how much? This is pi. This is 3 pi by 2. This is 2 pi. Now the time total taken from here to here, time for complete cycle, we say that is the time period t. Okay, so here I have taken in this direction angular displacement. Here I have taken angular displacement. Here I have taken the current. This is the diagram of a alternating current. So we got NBA sin omega t. यहाँ पर देखो sin omega t, sin का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? साइन टेबल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन साइन टेबल? दैट इज नथिंग बट 1. कब साइन क्या वैल्यू 1 होते हैं? जब एंगल 90 डिग्री होते हैं. इफ दिस omega t is equal to 5/2, that means sin value will be maximum. That means I can say that when sin omega t is equal to 1, that means the omega t is equal to pi by 2.
Sine 90 degree is equal to 1. Then what we get? We get maximum EMF, that is equal to NBA omega. NBA omega. That means in this case I can use this EMF is equal to E naught. In place of NBA omega, I am using E naught sine omega t. This omega t represents here. This represents omega t. Okay, already said that. Angular velocity is equal to theta by t, or theta is the product of w into t. This theta represents the angular displacement. यहाँ तक 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और in radians it is written 2 pi, 3 pi by 2, pi by 2. यहाँ पर current का EMF और you can say current और voltage maximum कब होते हैं? यहाँ पर मैक्सिमम होते हैं, यहाँ पर भी मैक्सिमम होते हैं. Here in alternating current, what happens? In alternating current, one half cycle is positive, another half cycle is negative. In direct current में ऐसे नहीं होते. देखो, in direct current, we can take like this. This is positive. Otherwise, we can take it is negative. डायरेक्ट करंट में एक ही डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होते, लेकिन अल्टरनेट करंट में उसका मैग्नीट्यूड चेंज होते हैं, उसके साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है. इन अल्टरनेटिंग करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस periodically after regular interval of time. So we got here equal to E naught sine omega t. Very important. Or I can say that I is equal to I naught sine omega t. अगर आप लिख सकते कुछ बुक्स में V equal to V naught sine omega t. From this side you can understand this is related with the alternating current or AC current. In alternating current हर वक्त पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज होते हैं. बच्चे लोग एक एग्जांपल देखो. आप लोग का घर में बल्ब जल रहा है, करंट है, लाइट इज ग्लोइंग. कभी आप फील किया कि आप उसका अंदर का बल्ब ऑफ एंड ऑन हो रहे? You won't feel that bulb is off and on when it is glowing. But यहाँ पर क्या होते हैं? करंट के वैल्यू इंक्रीज होते हैं, फिर यहाँ पर करंट जीरो हो जाते हैं, फिर एक बार करंट दूसरा डायरेक्शन में जाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में वो इंक्रीज होते हैं, फिर यहाँ पर भी करंट जीरो हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द करंट व्हाट वी आर यूजिंग इन आवर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. सी दैट सपोज जो करंट हम लोग यूज कर रहे हैं घर में, सपोज इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. So suppose its frequency is 50 hertz. That means 100 टाइम वो चेंज कर रहे हैं उसका डायरेक्शन. देखो वो वन साइकिल, वन टाइम, टू टाइम चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. That means फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब वही है कि वो करंट एक ही सेकंड में 100 टाइम्स उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. कभी इस साइड में, कभी उस साइड में, कभी इस साइड में, कभी उस साइड में. हाफ साइकिल इट्स पॉजिटिव, अनदर हाफ साइकिल इट इज नेगेटिव. सी हियर, वो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका डायग्राम है. आप ऐसे भी बता सकते
Suppose this is the this is also alternating current. This is also alternating current. This is also alternating current. Alternating current का मतलब वही है कि उसका डायरेक्शन और उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड वो चेंज होते हैं पीरियडिकली. ओके बच्चे, सो वी गॉट E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और आप बोल सकते I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं. कुछ कुछ बुक्स में E यूज होते हैं EMF, कुछ कुछ बुक्स में I यूज होते हैं, कुछ बुक्स में वोल्टेज भी यूज होते हैं. ओके, ऑल आर सेम थिंग. नो नीड टू कंफ्यूज ओवर दिस अल्टरनेटिंग करंट. सी हियर. Now I shall explain the current over a complete cycle. Current over a complete cycle. See here. AC over a complete cycle, or you can say average AC over a complete cycle. How it is? You see here. Now I average we got by using the formula I dt upon dt. Okay, I can use here, this is the integration 0 to t, complete one cycle. That's why I am using 0 to t. If it's a half cycle, I can use t by 2. So I can write this is just 1 upon t. Integration of dt is capital T. 0 to t I have used direct t. So this is I dt. This is 0. This is t. So I can write now this is 1 by t. उसका अंदर क्या लिख सकते हैं? I dt I am using I naught sin omega t. I naught sin omega t. See here, this is equal to 1 upon, this is t. by mistakenly मैंने पाई लिखा. देख 1 by t. I naught sin omega t. Here I am taking I as the, this is the constant, so I have written I by t upon 0 to t sin omega t. This is equal to I by t into sin omega t. This is equal to minus cos omega t upon omega. I took the integration from, this is the fixed one, 0 to t. So I can write it as minus I upon t, minus sign I have taken common. So omega also I shall take it common. This is how much left here? This is cos omega t. Cos omega t from 0 to t minus I upon t omega. In place of cos omega t, I am using here cos 2 pi, because I said that omega t is equal to 2 pi. See here,
Here to here is the omega t. This is the pi. This is 2 pi. So this is cos 2 pi minus cos 0 degree. Okay. So this is equal to minus I upon t omega cos 2 pi is equal to 1 minus cos 0 degree also 1. That means 1 minus 1 equal to 0. This is equal to 0. That means the alternating current over a complete cycle is equal to 0. You see that? Suppose this is 5 ampere current. Here also this is 5 ampere. That means this is plus 5. This is minus 5. So I can say that I average over a complete cycle is equal to 0. I average over a complete cycle, one cycle is equal to 0. I average also कुछ बुक्स में मीन वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते. Okay children, it is better I shall give one small example. It will be make you more clear. If I is equal to 5t square, 5t square, calculate I average at t equal to 3 seconds. Then what is the formula of I average? I average is equal to 0 to 3 I dt divided by integration of dt. Okay? बच्चे, this is equal to, I can write integration of 0 to 3 5t square upon dt 0 to 3. So I can write this is 5 t to the power 3 by 3 whole divided by this time t. This is 0 to 3. This is also I can write 0 to 3. So this is equal to 5 into this is 3 to the power 3, 27 by 3 means 9 divided by t 0 to 3 means 3. This is equal to 15 ampere. Hello students, I hope that you might have enjoyed this class. मैं उम्मीद कर रहे हूँ आप लोग सब लोग अच्छे से समझा. I expect that you will share this video with your friends. With this, I am completing my today's class. Until the next class, bye.